रिकॉर्डिंग जरा चेक कर ले भाई, मैंने ऑन किया हुआ है तुम्हारे लिए। यार और किसी के लिए रिकॉर्डिंग ऑन करनी है? तो रूहला रिकॉर्ड कर रहा है, एनीवन एल्स है कोई तो बता देना यार। ओके अस्मा, 1 मिनट देना। ठीक है अस्मा, आई थिंक आपका भी ऑन हो गया। Yes, Ruhul, if I would be in your place, I'll do all papers from 2004 all the way up to 2020. You're welcome, Asma. Okay, यार। So guys, आज मैं सोच रहा था फाइनली रेडियो एक्टिविटी की वर्किंग स्टार्ट करा दूं। ठीक है, सो आपके पास सिलेबस के अंदर योर रेडियो एक्टिविटी पोर्शन इज सब डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट डिस्टिंक्टिव टॉपिक्स। सो पहली चीज बेटा, रेडियो एक्टिविटी के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स है। और सेकंड चीज बेटा इसके अंदर है विच इज नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, सो गाइस पहले न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ स्टार्ट करा देता हूँ। होपफुली आज ये वाला काम कर लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद फंडामेंटल पार्टिकल्स लेटर ऑन। अच्छा ओके अमीना। तो गाइस न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या चीजें डिस्कस डिस्कस करें? द फर्स्ट थिंग, द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Is considered to be a random and a spontaneous process. तो रैंडम का क्या मतलब है? So technically, the term random means that the count rate emitted from any radioactive source fluctuates over time. ठीक है, so the term fluctuates basically implies कि आप कभी भी count rate record करोगे, so the value of the count rate will keep on changing. So कभी आपका count rate थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, कभी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी इंस्टेंट बाय इंस्टेंट फ्लक्चुएट करेगी, वेरी करेगी, चेंज करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रैंडम नेचर। So if you are asked how can we confirm the random nature, so the easiest way of confirming the random nature of radioactivity would be plot a graph of count rate against time. If the graph is not smooth, then this confirms the random nature. So you know, अगर आप कभी भी ग्राफ प्लॉट करते हो for any radioactive source, so this is how the shape of the graph would look like. So अगर vertical axis के ऊपर मैं count rate को show करता हूँ और बेटा horizontal axis पे time को show करता हूँ,
तो देखिएगा ग्राफ का शेप किस तरीके से बनेगा। सो फ्लक्चुएशंस का होना इम्प्लाई करता है कि द काउंटर विल कीप ऑन चेंजिंग, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा सा कम, as long as the shape of the graph is not smooth. So as long as the graph is not smooth, or you can say there are fluctuations in the graph, then this will confirm the random nature of radioactivity. तो ये तो पहली चीज होगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि the process is classified as a spontaneous process as well. तो spontaneous का क्या मतलब बनता है? ठीक है, तो रैंडम नेचर मैंने समझा दिया, डिफाइन भी कर दिया, ग्राफ से चेक कैसे करेंगे वो भी बता दिया। So what is the meaning of the term spontaneous nature of radioactivity? थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दो ताकि इसकी भी डेफिनेशंस आ जाए। तो द टर्म spontaneous nature means that the process of radioactivity does not depend on any changes taking place in the external environmental conditions, that is changes in pressure, changes in temperature, presence or absence of electric field or magnetic field, etc., etc. The term spontaneous nature means that this process of radioactivity does not depend on any changes taking place in the external environmental conditions. ठीक है, तो spontaneous का मतलब है कि आपका टेम्परेचर सराउंडिंग का चेंज हो जाए, प्रेशर वेरी कर जाए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस हो। जो प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी है वो जैसे पहले हो रहा था वो वैसे ही अब भी होता रहेगा। उस प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी पर इन्वायरमेंटल चेंजेस का कोई अफेक्ट नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म स्पॉन्टेनियस नेचर। ठीक है, रैंडम का मतलब था कि काउंट रेट आपका फ्लक्चुएट करेगा, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन any changes in the external environmental conditions. तो इसको कैसे चेक करेंगे? बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, मुझे मोहम्मद हुसैन ने पूछा है व्हाट इज काउंट रेट। सो मोहम्मद हुसैन, अगर आप रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने ओ लेवल्स में याद करो, रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने अगर आप एक जीएम ट्यूब ला के रख दिया करते थे, तो जीएम ट्यूब आपकी रिकॉर्ड करके आपको बताती थी कि आपके सोर्स में से कितनी नंबर ऑफ रेडिएशन निकल रही है
over a period of, let's say, 1 second or 1 minute or 1 hour. So that value recorded by the GM tube over a certain period of time, which tells you the number of radiations emitted from the source over a specific interval of time, उस वैल्यू का नाम ओ लेवल्स के अंदर मोहम्मद हुसैन काउंट रेट रखा जाता था. ठीक है, so basically count rate is the number of radiations emitted from a radioactive source over a specific interval of time recorded by the GM tube. अच्छा, अब extending this idea further, ये spontaneous nature को कैसे check करेंगे? Question: how can we check for spontaneous nature? Take two identical radioactive sources, place them at different temperatures. टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है. तो बस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज करके देख लें. तो दो रेडियो एक्टिव सोर्सेज को लीजिएगा, आइडेंटिकल सोर्सेज होने चाहिए, दोनों को स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर या स्लाइटली डिफरेंट प्रेशर पे प्लेस कर दीजिएगा. इसके बाद ऑब्जर्व, ऑब्टेन लिख देता हूं, obtain the count rate at specific time intervals from both sources and plot a graph of count rate against time. तो दो आइडेंटिकल सोर्सेस को लिया और स्पॉन्टेनियस नेचर चेक करने के लिए दोनों को स्लाइटली डिफरेंट टेम्परेचर या स्लाइटली डिफरेंट प्रेशर पे प्लेस कर दिया. टेम्परेचर सोच ले या प्रेशर सोच ले, जो भी आपको सही लगता है, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज करके देख. फिर दोनों के काउंट रेट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के साथ रिकॉर्ड करें और फिर दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लें. इफ the value of half-life obtained from both graphs is almost the same, then it indicates / confirms the spontaneous nature of radioactivity. ठीक है, काफी लोग कहते हैं सर हाफ लाइफ का क्या मतलब था. सो वो ओ लेवल्स में किया था कि हाफ लाइफ वाज डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द काउंट रेट टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू. दो आइडेंटिकल सोर्सेस को लिया, दोनों को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रख लिया. तो एक का टेम्परेचर बढ़ा दिया, दूसरी जगह का टेम्परेचर कम कर दिया और दोनों सोर्सेस को डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस में प्लेस कर दिया. फिर दोनों के काउंट रेट्स के ग्राफ बना लिए और ग्राफ से दोनों की हाफ लाइफ ऑब्टेन कर ली. सो अगर दोनों की हाफ लाइफ का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता है, then this would kind of confirm the fact that changes in the environmental conditions are not influencing the radioactive source, which in turn verifies the spontaneous nature of radioactivity. ठीक है, हानिया ने पूछा हुआ है, कैन यू रिपीट व्हाट हाफ लाइफ इज.
So Hania, half-life was defined as the amount of time taken for the count rate of any radioactive source to reduce to half of its previous value. So अगर किसी radioactive source का initial count rate 100 counts per minute आता है, so source अगर आपका initially 100 radiations emit करता है per minute, so the time it takes until the count rate reduces to become half, so 100 से drop करके 50 तक पहुंचने में जो time लगता है, that is referred to as the half-life of the radioactive source. ठीक है, तो हमने स्पॉन्टेनियस और रैंडम नेचर की डेफिनेशंस देख ली, कंफर्म कैसे करेंगे वो भी देख लिया. सब अगली चीज जो डिस्कस करनी है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एंड देयर प्रॉपर्टी. सो फिलहाल तो ये वाली डिस्कस करनी है. अब मैं पॉइंटर सारे लिख देता हूँ, और कोई भी पॉइंट अगर आपको याद ना आए ना, तो फिर वो मैं मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा. अल्फा की कौन सी प्रॉपर्टीज आप पढ़ा करते थे ना, मैं उसकी एक इंडिकेशन दे दूं. तो पहली चीज, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ऐसे करके लिखते हैं, resembles a helium nuclei, consists of two protons and two neutrons. Denoted as पहले आप इत्मीनान से सारी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, इसमें से जो भी प्रॉपर्टी मुझे एक्सप्लेन करनी हो तो बताते जाएं, और अगर फॉलो हो जाती हैं तो प्लीज याद रख लीजिएगा. अफवा, मेरा ख्याल है मैं प्रॉपर्टीज लिख के बेटा 5 मिनट्स का ब्रेक दे दूंगा, तो फिर तुम प्रे करके आ जाना. सो गाइस, तब तक तुम लोग सारी प्रॉपर्टीज देख लो जो मैं लिखता जा रहा हूँ, और कोई प्रॉपर्टी ना समझ में आए तो पूछते भी जाइएगा. कोशिश करके याद भी करते जाना. सारे टर्म्स प्लीज देख लेना.
पहले जरा यहाँ तक देख लीजिएगा। पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आई थिंक शायद मोहम्मद नकवी ने पूछा है। व्हाट इज यू इन द पॉइंट रिलेटिंग टू मास? सो मोहम्मद नकवी, यू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। सो सब एटॉमिक लेवल्स के ऊपर हम हर पार्टिकल के मास को यू की टर्म्स में मेंशन करते हैं। सो कार्बन का मास इज रिटन एज 12 यू। तो रिलेटिव टर्म्स में सिर्फ 12 बोलते हैं। एक्चुअल टर्म्स के अंदर जब आप मास को मेजर करते हैं, सो हम एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में सारे मासेस को मेजर करते हैं। एन एटॉमिक मास यूनिट इज सिंबलाइज्ड बाय द सिंबल ऑफ यू, वेयर 1 यू इज इक्वल टू सो एंड सो किलोग्राम्स। तो कैल्शियम का लिखेंगे ना हम मास एक एटम का, तो हम 40 यू लिखेंगे, which means 40 multiplied by 1.67 into 10 to the power of minus 27. So sodium लिखेंगे तो 23 U लिखेंगे, तो again 23 multiplied by this constant value and so on and so forth. फिर हारिस ने लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन पॉइंट 8। तो मैं यार 8 कौन सा है, मुझे गिनना पड़ेगा हारिस, तो मुझे फर्स्ट लाइन लिख के दे दो, 8 कौन सा वाला है, मैं एक्सप्लेन कर, बस फर्स्ट लाइन लिख देना। तब तक बाकी लोग भी देख लेना और कोशिश करके पॉइंटर्स रीड कर लेना। ओके, एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इसमें मैं एक्सप्लेन क्या करूंगी, तो फैक्चुअल चीज है। सो बेसिकली ऑल अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड, व्हिच इज 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो हारिस, अगर सारे अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड सेम है ना, सो डोंट यू थिंक हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी? तो हेंस द टर्म ऑल अल्फा पार्टिकल्स have the same kinetic energy. So when they travel in air, they roughly travel with the same speed, which is 10% of the speed of light, and consequently they have the same kinetic energy as well, and which is why they approximately travel the same distance in air, which ranges from around 4 to 5 centimeters. ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका रह गया है, कोशिश करके याद रखते जाइएगा ये सारे पॉइंट्स, दीज आर रिक्वायर्ड कि आपको याद होने चाहिए। During an alpha decay, that is alpha emission, comma, the mass number of the parent nucleus decreases by 4, and the proton number of the parent nucleus decreases by 2, as shown. So जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है ना, तो हम उसकी इक्वेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो लेट्स सपोज देयर इज अ सब्सटेंस एक्स, स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाते, बस अल्फाबेट लिख देता हूँ, whose mass number is 220 and whose proton number is 82. And imagine if this X, जिसका नाम मैंने parent nucleus रखा है, ये आपका डिके करता है, and it decays by emitting an alpha particle. तो जो नया वाला सब्सटेंस बनेगा, जिसका नाम मैंने Y रखा है, that is the daughter nucleus. अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन सोचनी हो, तो since alpha is 4 and 2, तो जो Y का टॉप नंबर आपके पास बनेगा, चेक कर लीजिएगा, मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, and if you guys are okay with the numbers which I've written, then just pay attention towards the numbers which I'm highlighting with the yellow marker. So from 220, the number has dropped down to 216.
and hence the statement, the mass number of the parent nucleus decreases by 4. So from 220, it has dropped down to 216. And likewise, proton number of the parent nucleus decreases by 2. So I believe वो भी आपका चेक हो जाएगा. ठीक है, तो नंबर्स की फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से कर लीजिएगा. और अगर आपको अल्फाबेट्स की टर्म्स में लिखना है ना, तो आप अल्फाबेट्स की फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, so this is how the equation can be written in terms of alphabets as well. अच्छा जी, दानियाल ने और हानिया ने ये पूछा हुआ है, can you explain the term ionization? जी, so imagine if an alpha particle is traveling in air. तो हानिया एंड दानियाल, जब एयर के अंदर आपका अल्फा पार्टिकल बेटा ट्रैवल करेगा ना, so it will collide with the air molecules. जब वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जाके हिट करेगा, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा. That energy will be absorbed by the air molecules, and that energy can eventually cause the electrons of the air molecules to be knocked off from their shells. Okay, so the energy imparted by the alpha particle to the air molecules can eventually cause the electrons of the air molecules to be knocked off from their shells. So from chemistry standpoint, the removal of electron results in the formation of ions. Hence, we say that the air molecules have gotten ionized, and this effect is known as ionization. ठीक है ना? सही है. तो गाइस, ये तो सारी प्रॉपर्टीज आपकी अल्फा की हो गई है. तो इसको एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स की बीटा में कौन सी प्रॉपर्टीज करनी है. मैं बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज लिख के 5 मिनट्स रखता हूँ. प्रेयर्स के लिए होकर आ जाना, फिर आई कंटिन्यू. मैं चाह रहा हूँ जरा बीटा की लिख लूँ साथ साथ. कोशिश करके इसके भी पॉइंट याद रख लेना. So a beta particle resembles an electron. So it looks like an electron. It is denoted by the symbol दोनों सिंबल सही हैं. It carries a charge. स्टेटमेंट्स पढ़ते जाना, ताकि कोई भी चीज अगर ना समझ में आए ना, तो आप मुझे लिखते जाइएगा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ.
The second last point and the last point are kind of interconnected. So in the second last point, it says that beta particles, when they are emitted, they generally travel with a speed of 90% up to 99% of the speed of light. Okay? Or if the speed is going to be in a range, then surely the kinetic energy of the beta particles will also be in a range. So hence the last wala point jo likha hai na, that is saying that they have a range of kinetic energies. So alpha particles all travel with the same kinetic energy. Beta particles have a range of kinetic energies. फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट, तब तक तुम लोग देख लेना कि कौन से वाले पॉइंट पे मुझे आपको एक्सप्लेनेशन ऑफर करनी है, तो फिर मैं लिखने के बाद वो चीज बता देता हूँ. They will pass through paper but can be stopped by a few millimeters thick lead, sorry, by a few millimeters thick aluminium sheets. Next wala point, they offer moderate ionization. Next wala point, they also deflect in electric and magnetic fields. Next wala, during a beta emission, comma, the mass number of parent nuclei remains unchanged, whereas the proton number increases by 1. ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ. कि इमेजिन अगर आपके पास एक सब्सटेंस एक्स है एंड लेट्स सपोज कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है 40 and 20 and let's assume x to be the parent nuclei. So अगर ये x एक बीटा पार्टिकल इमिट करेगा और बीटा की कॉन्फ़िगरेशन होती थी 0 पे टॉप इज 0, बॉटम पे -1, तो इसके साथ जो नया सब्सटेंस बनेगा, लेट्स लेबल दिस इज y, where y is the daughter nucleus. And if I ask you कि यार daughter nucleus की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, तो कैन यू रियलाइज 0 की वजह से टॉप का नंबर शुड रिमेन एज 40. सो जिन नंबर्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनकी बेसिस पर आप अपने स्टेटमेंट की वर्डिंग को फॉलो करें. ठीक है, ये तो आपका पहले स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन हो गई. एंड इफ आई आस्क यू, यार जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पर नंबर क्या आना चाहिए है, तो आप जरा इक्वेशन को खुद बैलेंस आउट करके देखिएगा. काफी लोग कहते हैं सर 19 लिख दें,
इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि -1 और +19 करेंगे तो रिजल्ट तो आपका 18 हो जाएगा। तो ये तो आपके 20 के साथ मैच नहीं करेगा, सो दिस विल नॉट वर्क ना। 19 से तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज 19 -1 गिव्स यू 18। श्योरली 19 तो गलत है, बिकॉज इक्वेशन बैलेंस आउट नहीं हो रही है। हाउएवर, जो नंबर शायद ज्यादा सेंसिबल रहेगा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का नंबर 20 था, आई बिलीव राइट हैंड साइड का जो नंबर आ रहा होगा 21 काइंड ऑफ मेक्स मोर सेंस। एंड इफ यू अलाउ मी टू हाईलाइट दीज नंबर्स, 20 on the left, 21 on the right. So this is consistent with the statement that the proton number increases by 1. ये सब लोगों ने 21 लिखा है, which is fair enough. So अगर आपको अल्फाबेट्स की टर्म्स में लिखना हो ना, तो आपका रिजल्ट इस तरीके से हो जाएगा. So if the mass number is A and the proton number is Z, so if a beta particle is emitted, which is 0 minus 1, then the new substance Y that is formed, uska top ka number remains unchanged. So A stays as A, and the bottom number, that is the proton number, increases by 1. So Z changes to become Z plus 1. Okay, now, to answer this question, um, Y proton number increases by 1 and mass number remains unchanged. During a beta emission. ठीक है, सो आंसर की वर्डिंग्स फॉलो कर लेना. मेरा ख्याल है स्टेटमेंट की ही फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा. सो ड्यूरिंग अ बीटा emission, it is believed that a neutron inside the nucleus splits to form a proton and an electron. The proton stays inside the nucleus and the electron is emitted from the nucleus in the form of a beta particle. Hence, mass number remains unchanged. है ना, मास नंबर इसलिए अनचेंज्ड क्योंकि न्यूट्रॉन रिड्यूसेस बाय 1, क्योंकि न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया ना, और उसके अगेंस्ट प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1. तो एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया था, सो न्यूट्रॉन का नंबर एक से कम हो जाएगा, और प्रोटॉन फॉर्म हो गया था, तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीजेस बाय 1. सो न्यूट्रॉन का कम होना
प्रोटॉन का इंक्रीज करना आपके मास नंबर को बैलेंस आउट कर लेता है। ये तो एक चीज हो गई। एंड प्रोटॉन नंबर surely increases by 1 because of this extra proton. ठीक है, हमने इक्वेशन तो ऊपर ही लिख दी थी, जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। सही जी, रख भी लिख रहा हूँ। तो फर्दर आगे देख लेते हैं बीटा पार्टिकल्स के लिए। सो बीटा पार्टिकल्स have a range of a few meters in air. So alpha were a few centimeters in air. Beta can easily travel a few meters in air. एक और point, since beta are lighter than alpha, therefore they deflect more easily in electric and magnetic fields. So, for example, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी हो, and if I ask you, there is a stream of alpha particles coming in which direction will they go? तो आई थिंक काफी ऑब्वियस होता है कि द स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा बीइंग पॉजिटिव ना, तो वो इस तरीके से नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। अगर आपके पास यही सिनेरियो होता, but if there was a stream of beta particles, then you would notice two things different. So क्या क्या चीजें डिफरेंट होंगी? So अगर ये स्ट्रीम ऑफ बीटा होता, तो पहली चीज, they will deflect more easily. तो अल्फा दूर जाके डिफ्लेक्ट हो रहे थे बिकॉज दे आर हेवियर पार्टिकल्स। बीटा इज लाइटर, तो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पहली चीज। और सेकेंडली, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वन पाथ, द स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स विल फॉलो मल्टीपल पाथ्स। तो काफी दफा स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये मल्टीपल पाथ क्यों फॉलो करेंगे? तो उसका रीजन मैं लिख दूं, और मैंने टॉप पे भी लिखा था, दे हैव रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, तो सिंस दे ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स ranging from 90% going up to 99% of the speed of light. So beta particles have a range of kinetic energies. किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, which is why in an electric field the magnitude of deflection varies. So कोई जल्दी deflect हो जाएगा, कोई थोड़ा देर से deflect करेगा. But in general terms, the deflection will be more easily observed as compared to a deflection in case of alpha, simply because they are lighter. Okay, आंसर हमजा ने सही दिया हुआ था। हानिया ने पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट स्टेटमेंट? आई थिंक हानिया, मेरा ख्याल है शायद डायग्राम से फॉलो हो गया होगा, नहीं? अच्छा, इरेजर लिखा हुआ है, इफ द डॉटर न्यूक्लियस हैज एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन वोंट इट बी चार्ज्ड? यस, इट विल बी चार्ज्ड। ठीक है, सो द डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड
will be definitely charged. The paragraph before this, जो मैंने आंसर वाली वर्डिंग लिखी है, उसकी बात कर रही हो हानिया? ठीक है। सो हानिया, सपोज करो, मैं नंबर्स के साथ आपको समझा देता हूँ। तो सपोज करो हानिया कि अगर आपके पास पेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो पेरेंट का नाम बेटा मैं एक्स रख देता हूँ. मास नंबर इज 40, प्रोटॉन नंबर इज 20. So would you agree there are 20 protons and there are 20 neutrons? अच्छा, अब सोचो कि आपका एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया. सो न्यूट्रॉन ने स्प्लिट करके एक प्रोटॉन बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन बना दिया. एंड दिस इलेक्ट्रॉन लीव्स in the form of beta particle. So don't you think the number of neutrons from 20 will now drop down to 90? And the number of protons from 20 will now jump up to 21. So if I ask you mass number कितना होगा? So बेटा mass number तो पहले भी 40 था, अब भी 40 होगा, because reduction in a neutron and increase in a proton balances out each other, no? And if I ask you कि अब proton का number कितना होगा? So पहले 20 था, अब 21 हो जाएगा. So hence the term proton number increases by 1. ठीक है हानिया? मेरा ख्याल है फिर मैं ये वर्किंग मिटा देता हूँ, लेकिन क्योंकि आई थिंक वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है हानिया, इसकी जरूरत है, सच नहीं है. प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अच्छा, मुझे 2 मिनट दे देना, बस मैं गामा की प्रॉपर्टीज लिख लूँ, जो एक्चुअली बहुत कम है, फिर मैं 5 मिनट्स रुक जाता हूँ. सर गामा रेडिएशन की सबसे कम प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट पॉइंट, these are high frequency electromagnetic radiations, neither have any mass nor any charge. They are denoted by the symbol of, they travel with the speed of light. They have negligible slash zero ionization. They have maximum slash infinite range in air. They can be stopped by a few centimeters thick lead sheets. They do not undergo any deflection in electric and magnetic field. They are produced in almost all nuclear reactions. And being
electromagnetic waves, comma, they follow wave properties. That is, the intensity I of gamma rays is known to be inversely proportional to the square of the distance. आपको शायद याद होगा हमने इंटेंसिटी के अंदर ये रिलेशनशिप करी थी. एक्चुअली हमने वेव्स में ये रिलेशनशिप करी थी. That intensity is inversely proportional to the square of the distance. So since gamma are also electromagnetic waves, they follow this relationship. So इस relationship का मतलब क्या बनता है? पहले तो ग्राफ बना दो. So intensity का distance के साथ relationship inverse proportion है. So this is how the shape of the graph would look like. Basically मतलब होता है जितना आप distance को बढ़ाओगे, intensity कम हो जाएगी. इसका दूसरा ऑप्शन ग्राफ बनाने का ये भी सही है. दोनों ग्राफ्स देख लेना. ठीक है, मैथमेटिकली स्पीकिंग दोनों ग्राफ्स करेक्ट है. एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग ये रिलेशनशिप का मतलब क्या बनता है, तो मतलब मैं नीचे लिख देता हूं नोट करके. The above relationship means that if we double the distance from the source emitting gamma rays, comma, the intensity reaching us will reduce to become 1/4. ठीक है, सो आई गेस वर्डिंग्स आप फॉलो कर लोगे ना. डिस्टेंस का डबल हो जाना इंटेंसिटी की वैल्यू को 1/4 कर देगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप. सही. हमजा ने लिखा हुआ है शुडंट इट बी डी स्क्वायर ऑन द ग्राफ एज वेल. यस हमजा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो अगर किसी को इंटेंसिटी का ग्राफ डी स्क्वायर के साथ बनाना हो तो हमजा तो भी इनवर्स रिलेशनशिप होगी. तो अगर डी स्क्वायर के साथ इनवर्स है तो डी के साथ भी इनवर्स होगी. अगर तुम डी स्क्वायर के साथ बनाना चाहोगे तो भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा. सो डी भी सही है, डी के साथ भी इनवर्स होगा. और तुम चाहो और डी स्क्वायर बनाना चाहो तो डी स्क्वायर भी सही है, डी स्क्वायर के साथ भी इनवर्स होगा. सेम शेप बनेगा. सो मैंने डी लिखा है, लेकिन अगर आप डी स्क्वायर लिखोगे द इनवर्स रिलेशनशिप विल स्टिल बी वैलिड. ठीक है गाइस, मैं 5 मिनट्स रुक रहा हूँ. असमा लोगों को प्रेयर्स के लिए जाना था, वो होकर आ जाए. किसी और को भी जाना हो तो प्रेयर्स के लिए होकर आ जाओ. वंस यू आर बैक तो मुझे प्लीज जरा लिख देना टेक्स्ट में दैट यू हैव जॉइंड बैक, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ. 5 मिनट्स रुक रहा हूँ, सो यू गाइस कैन गो एंड प्रे. वापस आ जाओ तो बस बता देना बेटा. मैं भी 5 मिनट में आ रहा हूँ.
Okay, G, I guess Asma is back, so I can get started. And Umair is also back. Fair enough. So guys, next वाले पेज पे जा रहा हूँ. So this is where we stopped. अगले वाले पेज पे जा रहा हूँ. So remaining portion क्या चीज डिस्कस करनी है ना वो देख लेते हैं. All right. So जो नेक्स्ट चीज यार कंटिन्यू करनी है ना. गाइस एक सेकेंड ना, ये पेज थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है. अ, ठीक है. तो यार नेक्स्ट चीज ये डिस्कस करनी है. कंपेयरिंग डिफ्लेक्शन ऑफ alpha particles and beta particles in an electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हाउ कैन वी कंपेयर कि अल्फा और बीटा में से कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा और कौन कम डिफ्लेक्ट करेगा. इमेजिन इफ द क्वेश्चन सेज कंपेयर डिफ्लेक्शन, बल्कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. इफ द क्वेश्चन सेज आपको कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ मासेस, ये सिर्फ मासेस की टर्म्स में आपको कंपैरिजन देना है कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा और कौन कम डिफ्लेक्ट करेगा. मुझे पता था मोहम्मद रूहुल्लाह लिखिएगा. नहीं यार, रूहुल्लाह वो मैंने मालूम किया था. आई थिंक वो ग्लिच जो है ना वो उसका है. अम, या वन नोट का है. सो जिसके पास भी टैब S6 है ना, या इवन S7 प्लस है, अम, अगर वो अपने वन नोट के ऊपर चीजों को इरेज नहीं करते ना, पुराने वाले सबके साथ आ रहा है. सो हाँ, आईपैड खरीद तो जरूर लूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ यार नया वाला आ जाए ना, और जरा प्राइस कम हो जाए तो फिर ले लूँ. आई थिंक इट वाज सपोज्ड टू बी लॉन्च्ड इन अप्रैल और समथिंग. आई थिंक इन अप्रैल ना. सो देखता हूँ कि कब लॉन्च होता है, क्या है. अभी अप्रैल में प्राइस ज्यादा होती है मेरा ख्याल है, एंड देन द काइंड ऑफ एक दो महीने में प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है, तो फिर आई थिंक ले लूंगा. आई थिंक हाँ अस्मा, आइडिया तो सही है, बिकॉज तुम्हारे पास जो गैप आ रहा है ना, उसके अंदर यू कैन डू दैट. सो आई थिंक दैट्स अ फेयर थिंग टू डू. हाँ, गुड नोट्स यूज कर लूंगा, यू राइट. एक्चुअली साल के बीच में चेंज करना रूल ना वो सेंसिबल नहीं था ना गुड नोट्स पे, बिकॉज फिर वो पूरे नोट्स आधे इधर हो जाते, आधे इधर हो जाते. सो बाय द टाइम इसने ग्लिच करना शुरू किया ना, आई वाज सो फार अहेड कि फिर मैंने सोचा गुड नोट्स पे शिफ्ट करने का अब फायदा नहीं है. पूरा एक साल का लेक्चर कंपाइल यहाँ पर हो जाए ना, इसके बाद ये एक फ्रेश स्टार्ट वहां से ले लो. ओके यार, तो मासेस की टर्म्स में कैसे कंपेयर करेंगे. सो गाइस, अल्फा का मास मैंने लिखा था 4u, विच इज दिस मच. और बीटा का मास was the mass of the electron, which is this much. अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो और किसी को अगर कंपेयर करने का शौक हो, तो आई थिंक मास ऑफ अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स
द मास ऑफ बीटा। अप्रोक्सीमेटली लिखा है, एग्जैक्टली नहीं लिखा, बट आप चाहें तो आप कैलकुलेटर यूज करके दोनों के मासेस को कंपेयर कर लो। तो इसका फाइनल सजेशन ये बनेगा ना, सिंस मास ऑफ अल्फा इज ग्रेटर, therefore it has more inertia, hence difficult to deflect, therefore conclusion रेड से लिख रहा हूं, deflection of alpha will be less as compared to deflection of beta। ठीक है, ये तो प्योरली मैंने मास की टर्म्स में लिख दिया है। So, मैंने दोनों के मासेस स्टेट कर दिए, and the fact that alpha का mass was roughly, not exactly, 2000 times greater। ज्यादा मास होगा ना तो ज्यादा इनर्शिया होगा, उसको डिविएट करना मुश्किल होगा, तो मासेस की टर्म्स में अल्फा की डिफ्लेक्शन कम होगी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इमेजिन इफ आई आस्क यू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, तो अब मास के बजाय चार्जेस की टर्म्स में कंपैरिजन कर लेते हैं। सो अल्फा का चार्ज +2e, बीटा का चार्ज -1e। So charge of alpha is 2 times the charge of beta. So alpha चार्ज की टर्म्स में विन कर जाता है कि अल्फा के पास चार्ज ज्यादा है, सिंस more charge therefore more deflection, hence conclusion रेड से लिख रहा हूं, deflection of alpha in terms of charges will be greater than the deflection of beta। ठीक है, तो मासेस की टर्म्स में अल्फा का मास ज्यादा था, जिसका मास ज्यादा होगा उसको डिफ्लेक्ट करना हमेशा मुश्किल होगा, तो डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ मासेस का कंक्लूजन आया था कि अल्फा की डिफ्लेक्शन लेस होगी। हाउएवर चार्जेस की टर्म्स में अल्फा का चार्ज इज 2 टाइम्स दैट ऑफ बीटा, और जिसका चार्ज ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा इजीली डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो प्योरली फ्रॉम अ चार्जेस स्टैंड पॉइंट, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा विल बी ग्रेटर। हाँ यार, इकरामा ने लिखा है वोंट इट बी -2 टाइम्स। माइनस को अकाउंट में लेने का फायदा नहीं है ना, माइनस विल जस्ट इंप्लाई कि दे विल डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो हम तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो माइनस लिखो या नहीं लिखो इकरामा, उससे एज सच वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर माइनस करके लिखना है तो बिल्कुल लिख दो, कोई इशू नहीं है, बट उससे मेरे फाइनल कंक्लूजन पे बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यार, काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो आपने सेपरेट कंपैरिजन किया है, व्हाट इफ यू आर आस्क्ड कि अब आपको दोनों चीजों को कंबाइन करके ओवरऑल कंपैरिजन करना है। सो आप चार्ज को भी और मास को भी, दोनों को कलेक्टिवली अकोमोडेट करके फिर कंपैरिजन करो। सो इसकी पूरी वर्डिंग स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ। द इफेक्ट ऑफ मास
outweighs the effect of charge, because मास में डिफरेंस 2000 टाइम्स का था, चार्ज के अंदर डिफरेंस सिर्फ 2 टाइम्स का था. So I'm sure this would be a fair comment to say that the effect of mass outweighs the effect of charge. So mass kind of ज़्यादा dominating factor है. Hence, on an overall base, deflection of alpha will be less than the deflection of beta. ठीक है, तो मास का 2000 टाइम्स होना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है एज कंपेयर टू चार्ज का डबल होना. तो ओवरऑल बेसिस पर effect of mass outweighs the effect of charge. So alpha का mass 2000 times ज्यादा है और charge सिर्फ twice ज्यादा है. तो mass ज्यादा influencing factor है. जिसका mass ज्यादा होगा उसकी deflection कम होगी ना. तो इसलिए मैंने final overall basis पे conclusion लिख दिया है कि alpha की deflection will be less as compared to beta. ठीक है जी हारिस, आपकी वर्डिंग बिल्कुल सही है. आप मास अपॉन चार्ज करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. सॉरी यार. ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया है. हारिस, आपका स्टेटमेंट भी सही है कि आप मास अपॉन चार्ज को भी कंपेयर करके लिख सकते हो, विच इज परफेक्टली ऑल राइट. नाउ जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर, दैट इज विथ रिगार्ड्स टू कि इमेजिन इफ यू आर आस्क्ड टू कंपेयर in terms of speed. तो पहले मास की टर्म्स में कंपेयर किया, फिर चार्ज की टर्म्स में कंपेयर किया, अब स्पीड की टर्म्स में कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा और कौन कम डिफ्लेक्ट करेगा. सो मैंने लिखा था ऊपर, अल्फा की वेलोसिटी इज 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. और बीटा के लिए लिखा था, they travel from 90 up to 99% of the speed of light. So इसका conclusion, since alpha travels slower than beta, therefore electric field gets ample amount of time to apply an electrical force on an alpha particle. Whereas in case of beta, since they have a higher speed, comma, they will quickly pass through the electric field
not giving ample time to the field to apply a significant force. जरा वर्डिंग प्लीज देख लेना. So speed की terms में this will be your conclusion. Deflection of alpha greater as compared to the deflection of beta. ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि अल्फा बीटा आराम आराम से ट्रैवल करता है, स्लो स्पीड के साथ ट्रैवल करता है. So consequently, the electric field has ample amount of time to apply a significant force on an alpha particle because वो slowly travel कर रहा है. बीटा बहुत जल्दी से आकर हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके जल्दी से निकल जाता है. So it does not allow electric field ample amount of time to apply a significant force. So in terms of purely in terms of speed, deflection of alpha will be greater as compared to the deflection of beta. ठीक है, हानिया तुमने उल्टा लिखा हुआ है. सो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी ना बेटा, वो तो बहुत ही जल्दी फील्ड में एंटर करके लीव कर जाएगा. सो द फील्ड विल नॉट हैव इनफ टाइम टू रिएक्ट. और जो स्लोली ट्रैवल करेगा उसके ऊपर द स्पीड विल हैव एम्पल टाइम टू रिएक्ट. अच्छा, यू रोट दैट बिफोर. सही है, मेरी स्क्रीन पे एक्चुअली अभी आया था. ठीक है, गॉट इट. अच्छा, फर्दर आगे. तो ये फोर्थ कंपैरिजन अब कर रहा हूँ. कंपेयर एक्सेलरेशन of alpha with acceleration of beta as they enter the same electric field. ठीक है, so imagine if I ask you, इसको as a question set कर देता हूँ कि आपको acceleration of alpha और acceleration of beta का रेशो फाइंड करना है. तो ये हम कैसे करेंगे? So remember, force is mass times acceleration, and force in electricity can be written as EQ. So EQ is equal to mass times the acceleration, which means acceleration if made the subject. तो आपकी acceleration का ये आंसर आएगा E times Q upon M. So अगर आप अलाउ करें तो मैं इसकी रिलेशनशिप को ऐसे लिख सकता हूँ कि acceleration depends on the ratio of charge upon mass. So अप्लाई करके देखते हैं यार. So अल्फा के लिए लिखूंगा ना, तो इस तरह लिखूंगा चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा. और जब बीटा के लिए लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे चार्ज ऑफ बीटा अपॉन मास ऑफ बीटा. अब ये सारे नंबर्स अप्लाई करने हैं ना, मैं लगा के दिखाता हूँ. ये सारे वो नंबर्स हैं जो मैंने आज की क्लास की बिगनिंग में लिखे थे. सो मैं स्क्रॉल अप तो नहीं कर रहा, प्रीवियस वाली स्लाइड पर है, लेकिन चूंकि याद है तो मैं लगा देता हूँ. अभी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं सिंप्लीफाई करके सारे आंसर्स लगा दूँ. अल्फा का चार्ज 2e, और अगर प्लस नहीं लिखना है तो भले नहीं लिखिएगा, कोई इशू नहीं है. अल्फा का मास
4 U. बीटा का मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और बीटा का चार्ज -1 E। सो माइनस की कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आपको माइनस नहीं लिखना हो तो मत लिखिएगा, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है। तो नेगेटिव को स्किप कर दीजिएगा, मैं भी स्किप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने माइनस को लास्ट वाले स्टेप से रिमूव कर दिया है। आपको लिखना हो तो आपकी चॉइस है, मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इरेज आउट कर दिया है। तो यार मेरा ख्याल है मेरे पास जो एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस मच। किसी को फिगर आउट करके कंफर्म करना हो तो कर लीजिएगा। आई डोंट क्वाइट नो कि ये सही है या नहीं है, बट मेरा ख्याल है शायद ये आ रहा है, तो मैंने लिख दिया। सही। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का रेशियो भी फिगर आउट करके आ गया। अम, एक लास्ट वर्किंग ये बच गई है कि एग्जाम के अंदर एक सर्टेन तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। इट्स नॉट 2.72, इट इज 2.74। ओके, चेंज कर देता हूँ। 10 का पावर सही है ना, आई एम प्रिज्यूमिंग। तो ये 2.74 कर देते हैं। ठीक है, 10 का पावर आई एम प्रिज्यूमिंग कि शायद सही होगा। सर एक वर्किंग और करा के फिर कंक्लूड करता हूँ। Calculations where energy is provided in units of EV rather than units of joules. तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही पूछते हैं यार, व्हाट इज ईवी? बिल्कुल सिंपल आंसर, alternate unit for energy। तो एनर्जी के हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। हम लोग एनर्जी को कैलोरीज के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। खैर हम तो यूज नहीं करते, इंटरनेशनली यूज किया जा रहा होता है। हम एनर्जी को किलोवाट आवर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। हम एनर्जी को जूल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। लाइकवाइज हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर एनर्जी। सो किलोवाट आवर, जूल्स, कैलोरीज, ईवी। तो जाहिर है व्हाट मैटर्स टू अस इज कि व्हाट इज 1 ईवी इक्वल टू। सो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन 1 ईवी is equivalent to this number। याद हो तो अच्छी बात है, वरना लर्न कर लीजिएगा। दिस नंबर इज नॉट गिवन इन एग्जाम्स। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लर्न करोगे। ठीक है, सिमिलरली
kilowatt hour is an other unit of energy. So ये कितने जूल्स होता है, ये भी मैंने लिख दिया है. This is also not given in exams. तो ये भी आपको kind of learn करना पड़ता है. So the question over here says, yes हारिस, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि 1 EV के अंदर जो नंबर मैंने लिखा है, coincidentally that number is equal to the charge of the electron. So the value which I'm highlighting, students को ये number वैसे भी याद हो जाता है, and probably that is why exam से देते नहीं है, because they think यार student को charge of the electron याद होगा, and this number is actually equal to the charge of the electron. So although not provided to you in the exams, but nonetheless आप लोग याद तो मेरा ख्याल है रख सकते हो. ठीक है. So अब what kind of calculations are you expected to know? So मैं एक example देता हूँ, जरा चेक कीजिएगा क्या लिखता हूँ. Carefully सुनना. An alpha particle, ये क्वेश्चन एग्जाम से काफी दफा आया है, similar question, requires 9.4 into 10 to the power of minus 3 joules to ionize an air molecule. Carefully पढ़ना. In a certain situation, an alpha particle is traveling with 31 electron volt of energy. Calculate the number of ions of air molecules which can be produced by this alpha particle. ठीक है, जरा केयरफुली देखना डिटेल्स में क्या क्या लिखा हुआ है. So one alpha particle requires this much amount of energy. Um, मैंने 10 की पावर में गलती से -3 लिख दिया है. आई वांटेड टू राइट डाउन -13. सॉरी, एक सेकेंड. ओके. So an alpha particle requires so and so energy. इतनी एनर्जी चाहिए होती है to ionize a single air molecule. In a certain situation, an alpha particle is traveling with 31 electron volt of energy. Calculate number of ions of air molecules that can be produced by this alpha particle per unit length. अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो ये एक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है. कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा. कोई स्टेप रिपीट करना हो तो बता दीजिएगा, मैं खामोशी से करता जा रहा हूँ. तो आप बस कैलकुलेशंस को फॉलो कर लो, मुझे लगता है वैसे ही फॉलो हो जाएगा.
इसका आंसर मुझे चाहिए होगा, मुझे आइडिया नहीं है। While you guys are giving me the answer, इसका अगर आंसर आ जाए ना यार। ओके 5.3 पे राउंड ऑफ कर देता हूँ, इट्स फाइन। 10 to the power of -6 आ रहा है, बिल्कुल सही। ये मेरा स्टेप 2 हो गया। काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये 4.5 का नंबर आप कहाँ से लेकर आ गए। पहले मुझे आंसर लिख लेने दें, फिर मैं 4.5 खुद ही समझा दूंगा। ठीक है, तो ये 4.5 इंटू 10 to the power of -2, ये नंबर मैं कहाँ से लाया हूँ। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, तो प्रॉपर्टी थी अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल a range of 4 to 5 centimeters in air. Hence, I took an average value. तो मैंने बेटा एक्सप्लेनेशन साथ में लिख दी है कि मैंने 4.5 वाला नंबर कहाँ से लिखा था। और किसी ने अगर फाइनल आंसर निकाला हो, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ रहा है। दिस इज number of ions produced per unit length. ठीक है, तो मैंने स्टेप 1 के अंदर एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट कर दिया बेटा। स्टेप 2 में डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाल लिए। और लास्ट वाले स्टेप में मैंने टोटल आयंस को रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल से डिवाइड कर दिया टू गेट द आंसर फॉर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर डिड आई गेट 4.5 इंटू 10 to the power of -2। सो लिख दिया है मैंने कि अल्फा पार्टिकल्स हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 4 to 5 centimeters in air. Hence I took an average value that was 4.5 times 10 to the power of -2। ठीक है गाइस, मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर अब आज वाली क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी थ्योरी को ही कंटिन्यू करूंगा, और थोड़े से एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी साथ साथ ही इसके करा दूंगा। ठीक है यार रूहुल्ला, जब टाइम मिले बेटा तो वो कर ले, क्या नाम है, अपलोड कर लेना। हाँ सही है। ठीक है गाइस, यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। ऑल राइट यार, खुदा हाफिज बेटा, टेक केयर। ऑल राइट, खुदा हाफिज रूहुल्ला बेटा।